सरफेस की तरफ आती है. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट waves to arrive are the S waves. Then the S waves arrive at the surface. I repeat myself again. First of all, when ये वाला यहाँ पे, ओके, इस पॉइंट पे, फोकस पे, दिस इज द फोकस. ओके, यहाँ पर जब वेव जनरेट होती है तो पहले पी वेव्स जनरेट होंगे, फिर उसके बाद एस वेव्स. तो ऑब्वियसली सरफेस को हिट करने का भी वही ऑर्डर होगा. ओके, व्हेन द वेव्स हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे विल हिट इन द सेम ऑर्डर. सो you know it is the p waves first and then the secondary waves. Okay, and then उनका जो interaction होता है with the rocks, उसकी वजह से the surface waves are set up. Okay, fine. They can, अब ये प्राइमरी वेव्स जो होती है, they can travel through both all mediums, solid भी and fluid भी. Okay, liquid, gaseous, medium, हर medium में से travel कर सकते हैं. And this is very unique. Okay, this is absolutely unique to P waves. बाकी सारे waves अगर आप consider करते हैं, तो if you consider the rest of the waves, तो they can only travel through solids but not through fluids. Okay, this follows for all these waves. ये सारे के सारे जो waves है, S waves, L waves, Rayleigh waves, P waves के अलावा ऐसा कोई wave नहीं है जो मतलब seismic waves में. Okay, जब हम ये seismic waves का comparison करते हैं, तो other than P waves there is no other wave that can travel through fluids. Okay, only P waves can travel through solids as well as fluids. मतलब gas में भी pass कर सकते हैं, liquids में से भी pass कर सकते हैं. ये P waves की यूनिकनेस है. ओके, अभी ऑब्वियसली पी वेव्स का शैडो जोन जो होगा वो क्लियरली इसकी वजह से स्मॉलर है. एस वेव्स हैव अ लार्जर शैडो जोन एंड सरफेस वेव्स का कोई शैडो जोन नहीं होता है. सरफेस वेव्स हैव नो शैडो जोन. ओके, उनका कोई शैडो जोन नहीं होता है. I'll explain to you what shadow zones are, so that's not a problem. Give me a moment here. P waves जो होते हैं वो सबसे, they are considered as least harmful of all waves. Okay, least harmful of all waves are considered P waves because I told you, right, they are traveling within the body of the earth. While they are traveling within the body of the earth, it causes no harm to the human beings who are situated on the surface of the earth. है ना, अर्थ के अंदर जो भी चल रहा है उससे हमको फिलहाल तो कोई फर्क नहीं पड़ता. So and neither do S waves because you know S waves थोड़ा सा harmful इसलिए हो सकता है because closer, right, you know that can be a little harmful. बट एल वेव्स जो होती है एंड Rayleigh waves जो होते हैं, वाटर वेव्स जिसको हम कहते हैं, those are clearly harmful because they are set up on the surface and that is what really causes destruction of the earth. Okay, तो हमारे लिए cause of concern is only surface waves. Cause of concern is really surface waves. Of course, primary waves and secondary waves are harmful in a way कि जितने strong primary and secondary wave setup होती है, of course उतने ही strong उसके मतलब you know उसके इंटरेक्शन की वजह से उतने ही स्ट्रॉन्ग सरफेस वेव सेटअप हो जाएंगे. लेकिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग्स को या हमको हर्ट नहीं करते. ओके, लाइक इट हैज नो बिजनेस डूइंग दैट. ओके, ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड शैडो जोन्स. शैडो जोन का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. शैडो माने क्या है पीपल? Something that is, shadow here means something that is hidden or something that is not visible or something that is not found. You know, that would be a better way of looking at it. That is what shadow would mean over here. Okay, so shadow zone मतलब वो वाला specific area जहाँ पर ये seismic waves जो है ये ना तो रिपोर्ट होते हैं ना रिकॉर्ड होते हैं. Okay, these waves are neither reported nor recorded. That's a better way of looking at it. All right, shadow zone किसी भी wave का, for especially when you consider S waves and P waves, जहाँ पर waves नहीं जाती, हाँ जी, जहाँ पर waves नहीं जाते, जहाँ पर waves नहीं जाते, नहीं मिलते, तो that place is called as, that particular zone is called as a shadow zone. Okay, once again I repeat, shadow zone सिर्फ body waves का हो सकता है क्योंकि shadow they are traveling through the body, right, and then received on the surface. तो ये clearly सिर्फ body waves का ही हो सकता है. सरफेस वेव्स का कोई शैडो जोन नहीं होता है. ओके, बिकॉज वो क्लियरली सरफेस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव अ शैडो जोन. सरफेस वेव्स डू नॉट हैव अ शैडो जोन. ओके, फाइन. नाउ ये जो बॉडी वेव्स होती है ये क्यों रिकॉर्ड नहीं होते या क्यों रिपोर्ट नहीं होते, उसका एक रीजन, वन, व्हेन इट कम्स टू पी वेव्स. ओके, पी वेव्स के साथ क्या हो जाता है कि पी वेव्स ना, अभी यू विल से कि पी वेव्स जो होती है वो क्लियरली सॉलिड, लिक्विड, गैसियस हर मीडियम से ट्रैवल करती है. ओके, कैन यू सी दिस पॉइंट यहाँ पर पी वेव्स? ओके, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, एक मिनट, ये वाला पॉइंट है ना जहाँ पर क्वेक लिखा है ना, क्या हो गया मेरा, ये नहीं चल रहा है. ओके, यहाँ पर जहाँ पर क्वेक लिखा है, दिस क्वेक, हाँ, यहाँ पर इस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज हो गई. ओके, द एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड एट दैट पॉइंट एंड देन इट ट्रैवल्स इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन. क्लियरली है ना, इट डज दैट. ओके, तो ये पी वेव्स के अलग अलग पार्ट्स हैं. ऑलराइट, नाउ व्हाट हैपेंस इज ना कि
ये जो वेव्स है, यू विल सी कि इसका, ओह सॉरी, मैं आपको एस वेव का दिखा रही हूँ। चलो मैं पहले एस वेव का एक्सप्लेन करती हूँ, दैट्स अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, है ना। एस वेव का एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद पी वेव्स का एक्सप्लेन करती हूँ। तो एस वेव्स का देखते हैं। एस वेव्स की खासियत क्या है, ये सिर्फ सॉलिड में से पास करता है। ओके सॉरी, आई जस्ट गो टू द एस वेव्स फर्स्ट। एस वेव्स जो होती है वो सिर्फ सॉलिड्स में से पास करता है। ओके, दे ओनली ट्रैवल टू द सॉलिड्स। ऑलराइट, तो जहां पर कहीं लिक्विड एनकाउंटर कर देंगे, एस वेव्स विल स्टॉप, लाइक उनका पूरा ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा। ओके, एस वेव्स विल नॉट बी ट्रांसमिटेड एनी फर्दर। सो ये हमको याद करना पड़ेगा कि कोर जो होता है उसका इनर कोर सॉलिड है एंड आउटर कोर इज लिक्विड। ओके, आउटर कोर जो है दैट इज लिक्विड। तो ये आउटर कोर को जैसे ही एनकाउंटर करते हैं, व्हेन as and how these waves encounter, as soon as the waves encounter the outer core which is liquid, ये waves उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, वेव जो होता है वो क्लियरली जहाँ पर लिक्विड आउटर कोर को एनकाउंटर करते हैं, मीट कर जाते हैं, वहां पर वो स्टॉप कर जाता है उसका ट्रांसमिशन। एंड उसकी वजह से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसके बियॉन्ड दिस ये जो 105 है ना, 105 के बियॉन्ड आपको कोई एस वेव्स का ट्रांसमिशन ही नहीं मिलता है। ओके, तो एस वेव्स का ट्रांसमिशन इज नॉट फाउंड बियॉन्ड दिस पॉइंट। ओके, ये 105 डिग्रीज किसके रेफरेंस के थ्रू होगा, इस पॉइंट के रेफरेंस के थ्रू। ओके, ये जो पॉइंट ए है ना, जहां से क्वेक का सारा एनर्जी रिलीज हो गया है ना, तो उस पॉइंट के रेफरेंस से 105 डिग्रीज आगे। ओके, 105 डिग्रीज ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद आपको एस वेव्स का ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, दैट विल बी 105 डिग्रीज के बियॉन्ड विल बी द शैडो जोन। ओके, फॉर द एस वेव्स। इज दिस अंडरस्टूड पीपल? समझा आपको ये? ये एस वेव्स का शैडो जोन। विद पी वेव्स ना, पी वेव्स आर अ लिटिल फनी। पी वेव्स के साथ क्या हो जाता है, पी वेव्स गेट रिफ्रैक्टेड। ओके, पी वेव का शैडो जोन थोड़ा छोटा होता है, दोनों साइड पे मिल जाता है आपको क्लियरली, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि ये वेव्स ना रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। वी हैव डिस्कस दिस राइट, अर्थ के जो तीनों क्रस्ट है, एंड विद इन दोस तीनों लेयर्स है, क्रस्ट, मैंटल एंड को, एंड इवन विद इन दोस लेयर्स जो सब डिविजन्स मिलते हैं आपको क्लियरली, तो वो सारे के सारे हैव डिफरेंट डेंसिटीज। ओके, ऑल दीज लेयर्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होती है तो क्लियरली वेव्स रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। लाइट जैसे रिफ्रैक्ट हो जाता है, वैसे वेव्स का, ये नॉर्मल एनर्जी वेव्स जो होते हैं उसका भी रिफ्रैक्शन हो जाता है। वो ऑब्वियसली अपना स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ये स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज जो हो जाता है, ये जो रिफ्रैक्शन हो जाता है वेव्स का, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द लेयर्स दैट द पी वेव्स आर पासिंग थ्रू, उसकी वजह से इस जोन में 105 to 145, ये वाले जोन में ऑन बोथ साइड्स, ओके, ऑन बोथ साइड्स 105 to 145 के जोन में पी वेव्स रिसीव नहीं होते, एंड दिस इज द शैडो जोन ऑफ द पी वेव्स। इज दिस ओके पीपल? समझा आपको शैडो जोन दोनों का, एस वेव्स का भी एंड एल वेव्स का भी, एस वेव्स का भी एंड पी वेव्स का भी? Should I explain it once more? No, you've gotten it right. Okay. समझ गया। Okay, thank you, thank you. तो shadow zone का concept, like I just discussed, it is a relative concept, not an absolute concept. Okay, it does not mean कि Earth पे किसी भी point, Earth के उस point से you have to consider this 105, 145 degrees वगैरह जो होता है ना, वो आपको उस point पे consider करना है जहाँ से ये आपका reference point है, जहाँ से energy release हो गई है. So it is always a relative concept. जहाँ पर energy release हो गई है उसके relation में 105 degrees के बियॉन्ड एस वेव्स का शैडो जोन, एंड 105 to 145 डिग्रीज में पी वेव्स का शैडो जोन. ओके, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. इज दिस ओके? हमेशा रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है. सो इट इज नॉट लाइक, एक कॉमन क्वेश्चन जो आपको हमेशा पूछा जाता है कि इज देयर अ सर्टेन रीजन इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, जहां पर वेव्स रिसीव ही नहीं होते. इट इज नॉट पॉसिबल टू रिसीव पी वेव्स और एस वेव्स. तो ऐसा नहीं है. इट इज नॉट लाइक there is some place on earth which is always in the shadow zone. The shadow zone is always relative to wherever the quake is happening. Okay, so जहां पर कहीं अर्थ पे क्वेक हो रहा है तो उसके रिलेटिव जो ये डिग्रीज होंगे 105 to 145, उसमें फिर आपको शैडो जोन्स मिल जाएंगे. ओके, ठीक है, good. Let's look at the different types of earthquakes. These are very common earthquakes that we have seen earlier also. टेक्टोनिक अर्थक्वेक. टेक्टोनिक अर्थक्वेक माने जो हमने देखा था ना, अर्थ के प्लेट्स शिफ्ट होते रहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो एक या तो स्लाइड कर जाते हैं या दे आर कमिंग टुगेदर और दे आर मूविंग अवे. तो
तो उसकी वजह से what happens is कि due to the sliding of rocks along a fault is developed usually. अगर वो fault plane के along energy release हो जाता है, and then this is the most common type of earthquake है ना, tectonic earthquake. So that happens, okay. Volcanic earthquake, usually volcanic eruptions के साथ साथ earthquakes भी आ जाते हैं. They sometimes more often than not they go hand in hand, okay. Volcanic eruptions and earthquakes, they go hand in hand, especially if they occur in a region जैसे Pacific Ring of Fire वगैरह ऐसे किसी region में occur कर गए तो फिर certainly that's the case, okay. Collapse, this is one scary thing. बड़े बड़े माइंस होते हैं ना, ह्यूज माइंस, ओके, जहाँ पर बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटी चलती है, एंड फॉर अ वेरी लार्ज रीजन ऐसे बड़े बड़े रूफ्स डेवलप हो जाते हैं. अनफॉर्चुनेटली जब वो रूफ्स कोलैप्स कर जाते हैं ना, माइंस के रूफ्स कोलैप्स कर जाते हैं, तो वो बहुत हैवी प्रेशर हो जाता है, राइट. तो उसकी वजह से माइनर ट्रेमर्स हो जाती है एंड अर्थक्वेक्स कैन बी जनरेटेड. एक्सप्लोजन्स की वजह से, जैसे बहुत मेजर न्यूक्लियर या केमिकल एक्सप्लोजन्स हो गए, तो फिर हम वो अंडर वाटर टेस्ट वगैरह करते रहते हैं या फिर ऐसा कुछ, तो उसकी वजह से यूजुअली अर्थक्वेक्स सेटअप हो जाते हैं, लाइक ट्रेमर्स आर सेट. reservoir induced, that is one. Let's give you an example. Hydrostatic pressure की वजह से जो earthquakes develop हो जाते हैं, because what happens is human beings जब हम dams erect करते हैं ना, when huge हम बड़े बड़े reservoirs erect करते हैं, so what we do is that we try to keep the water at bay. Okay, हम एक बड़ा सा wall erect करते हैं, we go ahead and erect a huge wall. एंड उस वॉल के अंदर उस वॉल के पीछे, ओके, बियॉन्ड दैट वॉल, उस वॉल के पीछे हम वो सारा पानी जो होता है ना उसको डैम कर देते हैं. वी डैम ऑल दैट वाटर, ओके. ऑल दैट वाटर इज स्टोर्ड बिहाइंड दैट वॉल, एंड देन जैसे हमको जरूरत होती है वैसे हम ये स्लुइसेस या गेट्स ओपन कर देते हैं एंड पानी को निकाल लेते हैं, ओके. is the whole concept of a dam. The problem is कि ये जो पानी होता है ना उसका weight होता है, right? And that weight exerts pressure on the surface of the earth. Okay, तो वो hydrostatic pressure जो होता है उसकी वजह से earthquakes develop हो जाती है. अभी you will say कि यार ये तो फिर कहीं भी होता है, तो that is not true, because हम जब dams build करते हैं तो clearly वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, okay. And we are talking of like there is always this key, Deccan Plateau, it was considered pretty stable, बहुत stable craton समझा जाता था Deccan Plateau को. लेकिन unfortunately we had a nice earthquake over here that is considered to be, वो कोयना की वजह से हुआ है ऐसे हम assume करते हैं, okay. Like there is only one reason that there is a school of thought that says कि कोयना reservoir की वजह से, कोयना dam जो था उसकी वजह से that earthquake was induced, all right. And then we've had multiple earthquakes, right? वो बुज का भी earthquake हो गया and all that sort of thing. तो उसके बाद वो भी earthquakes हो गए. So there is a common consensus among the geographical school of among the geographers कि वो hydrostatic pressure की वजह से होता है. चाइना का एक famous dam है, Three Gorges करके. That dam has it has been considered a culprit in many China के region में वैसे भी बहुत ज्यादा earthquakes होते रहते हैं उस region में. It's a little nature wise थोड़ा सा problem है वहाँ पे. So वो clearly मतलब वो थोड़ा सा seismically vulnerable region है, nature wise, as in that is how it is, okay. It falls in a seismically vulnerable region. So that dam has also been considered the culprit when it comes to those reservoirs, when it comes to those earthquakes. कि वो जो Three Gorges dam है ना, या फिर multiple other dams like that, China has been on a spree doing like ऐसे चलो dam building spree, बहुत बड़े सारे dams build करते हैं, तो उस चक्कर में earthquakes होते हैं. That's the logic, okay. Now let's look at to another type. अब ये पांच छह का ये हो गया, distinction हो गया. Now let's look at two major types of earthquakes, okay. You can either have deep focus earthquakes or shallow focus earthquakes. I repeat myself again. This is the surface of the earth, ऊपर की तरफ surface है, okay. यहाँ पर focus होता है ना, this is the focus. कहीं भी जमीन के नीचे, okay, जमीन के नीचे जहाँ कहीं seismic energy release हो जाएगी, that is the focus, okay. And उसका the first place where the waves are going to hit the surface of the earth is called as the epicenter, okay. उसको epicenter कहेंगे. I'm just calling it E, okay. That always happens to fall on the surface of the earth and the focus lies within the earth, okay. Now where the focus lies, how far within the earth the focus lies, will help you to distinguish between or decide between deep focus and shallow focus earthquakes, okay. So deep focus earthquakes वो होते हैं जिसमें focus lies 300 to 700 kilometers from the surface, very deep beneath the earth, okay. So that is where the
focus lies. All right. Now this usually gets, you know, ये उन earthquakes के साथ associated होता है जहाँ पर you have those convergent boundaries and subduction zone, है ना? One plate you know is subducted below the other. Suppose this is one plate, okay? This is one plate and this is the next plate, okay? Oh no, गलत, okay. जाने दो, it's okay. ये सेकंड प्लेट है, ओके? तो एक प्लेट जब दूसरी प्लेट के नीचे चला जाता है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द सबडक्टेड प्लेट, ओके? इसको सबडक्शन जोन कहते हैं, जहां पर सबडक्ट हो जाता है एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे। तो वो वाला जो सबडक्शन जोन होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वदाती एनवाफ जोन। तो ये वो साइंटिस्ट के नाम के पीछे। तो ये जो जोन होता है ना, तो यहाँ पर जो यूजुअली बिकॉज इट इज रियली डीप, राइट? तो ये दिस इज एसोसिएटेड विद द डीप फोकस अर्थक्वेक्स, ओके? ये जो अर्थक्वेक्स होते हैं दे आर वाइडली फेल्ट, ओके? यू कैन फील द ट्रेमर्स, कम ट्रेमर्स महसूस होते हैं क्लियरली, लेकिन द ट्रेमर्स आर वाइडली फेल्ट, ओके? बहुत दूर दूर तक महसूस होता है आपको। यू कैन फील द अर्थक्वेक थ्रू अ लार्जर डिस्टेंस, एक्सपांसिव डिस्टेंस तक फील कर सकते हैं। Whereas minimal surface waves आती है, they are less damaging, okay? So prefer the deep focus earthquakes because human beings के लिए less damaging होते हैं. On the other hand, let's consider shallow focus earthquakes. उनको crustal earthquakes कहते हैं because clearly the focus lies within the crust, है ना? 0 to 100 kilometers का crust मानते हैं हम लोग अपना. So it lies within the crust. Focus lies less than 70 kilometers below the surface of the earth. Okay, so these are called as crustal earthquakes. These are less widely felt. Okay, बहुत दूर दूर नहीं feel होता है ये earthquake, लेकिन ये ज़्यादा damaging होता है because ये जो waves होती है ना, they are very close by ना, वो focus बहुत close होता है crust के, तो ये waves बहुत जल्दी से travel कर जाती है and then ये surface waves set up कर जाते हैं and stronger interaction होता है. So the surface waves are clearly stronger, okay, in this case. ठीक है क्या people? Are we good here? Okay, ठीक है. All right. Next you come to earthquakes measure करते हैं हम लोग, okay? How do you measure earthquakes? Earthquakes can be measured on two scales. Two different qualities measure करते हैं earthquake की. Either you measure the energy of the earthquake or the magnitude, okay? Either of it, either like जो भी वो quantity है, either you measure the magnitude or you measure the energy released in an earthquake, okay? And that is called as the Richter scale or the Richter scale, whatever you wish to call it. And German बंदा है, so decide accordingly. Okay. All right. Second case could be, let's just go with the Richter scale first, okay? ये सिर्फ magnitude या energy measure करता है, okay? Or the strength of an earthquake, energy released in an earthquake or the magnitude of the earthquake, okay? So this was devised by Charles Richter in 1935. ये scale तब design किया था उन्होंने, and it is measured. एक proper instrument मिलता है जो हमने अभी एक seismogram देखा था ना. So there is a proper instrument, a seismograph, which measures the energy, and then वो waves को record करता है, and then you make your observations according. I mean, you make your conclusions according, draw conclusions accordingly. Okay, ये clearly logarithmic scale है. It's obtained by calculating the logarithm of the amplitude of the wave. Okay, wave का जो amplitude होता है उसका log calculate करते हैं, and then उस हिसाब से आपका scale logarithmic होता है. Okay, so the range is about इसका range देख लीजिएगा 0 to 10 plus. Okay, इसका upper scale कुछ है नहीं. Okay, this logarithmic scale है ना, it doesn't have an upper limit. Okay, इसका कोई upper limit नहीं होता है Richter scale का. It can go anywhere beyond it. हम 10 plus के beyond नहीं measure करते because clearly 10 plus के beyond measure करने का फायदा नहीं है. 10 plus का ही 10 का ही ये माना जाता है कि will break the entire earth. अगर 10 का earthquake हो गया, उसके beyond अगर earthquake हो गया, तो then it will clearly break the earth. So we don't measure anything beyond it. Okay. But clearly the scale has no upper limit. Please remember this, okay? If on every level ना, इसका see people logarithmic scale का फायदा, यार किसी का mic on है people. प्रथमेश. Sorry ma'am. Okay, no problem. Logarithmic scale का मतलब समझ लीजिएगा. In practical terms, okay? मैं आपको maths नहीं पढ़ा. I'm not explaining the math behind it. I'm telling you in very practical terms. Logarithmic scale का मतलब होता है कि say suppose I have a earthquake that
लेवल 1 का earthquake है, okay? रिश्टर स्केल पे लेवल 1 का earthquake होगा, and let's consider level 2 का earthquake, okay? So अभी level 2 का earthquake will be 10 times worse or 10 times stronger than the one that happens at level 1, okay? लेवल 1 का जो earthquake है उससे 10 times stronger or 10 times more dangerous would be considered a level 2 earthquake, and a level 3 earthquake would be considered 10 times stronger than a level 2 earthquake, है ना? That's the logarithmic scale, है ना? Natural log. Now log to 10 to the base 10, okay, to the base 10 उसकी बात कर रहे हैं हम लोग. Now what happens is, other than that, other than the strength of the earthquake and कितने times stronger है वो, other than that there is another concept of the energy released. हम magnitude measure करते हैं, मतलब क्या measure करते हैं? Energy कितनी release हो गई है, right? वो energy 32 times stronger होती है every single time. So level 2 पे 32 times stronger energy as compared to level 1. Level 3 पे 32 times stronger energy as compared to level 2. So on so forth. Okay. This is the practical relevance of a logarithmic scale. So this is what we need to measure. Okay, people? Good so far? याद रहेगा? All right. Now you to Mercalli scale. मकाली जिस पे मकाली नाम के एक ये थे जोग्राफर थे, उन्होंने डिजाइन किया था ये स्केल 1902 में. ओके, दिस स्केल वाज डिजाइन्ड अर्लियर देन द रिश्टर स्केल. लेकिन ये जो है ना, ये इंटेंसिटी मेजर करता है अर्थक्वेक का. ओके, इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी. ओके पीपल, मैग्नीट्यूड माने एक्चुअल एनर्जी रिलीज्ड, स्ट्रेंथ कितना है इसका अर्थक्वेक का. देयर इज मकाली स्केल क्लियरली इंटेंसिटी मेजर करता है. अब ये इंटेंसिटी माने व्हाट यू एक्चुअली मेजरिंग इज यू मेजर कि कितना नुकसान हो गया है ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन ह्यूमन बीइंग्स, ऑन ऑब्जेक्ट्स, मैन मेड स्ट्रक्चर्स, है ना. हाउ मच टैंजिबल डिस्ट्रक्शन कैन यू सी, जिसका कितना जान माल का नुकसान हो गया. दैट इज व्हाट यू आर मेजरिंग एक्चुअली. तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं आप लोग कि यार these many buildings and so many people and these many bridges and so on so forth. Okay, so ये जो quantified observations होते हैं, तो इसके basis पे मकाली स्केल का इंटेंसिटी डिसाइड होता है. Okay, so this is measured using observations. There are no instruments available. यहाँ पर कोई instruments नहीं यूज कर रहे हैं आप. Okay, like ऐसा कोई यहाँ पर कैसे अच्छा खासा एक seismograph यूज कर रहे थे, right, in Richter scale. So clearly you don't have that in the Mercalli scale. Mercalli scale is just trying to measure ki how much scary or how destructive was the earthquake based on कितना नुकसान हो गया, how much destruction has happened. Okay, इसका range is 1 to 12. इसका range 1 to 12 माना जाता है. Okay, are we good people? समझा आपको? प्लीज याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिश्टर स्केल क्या मेजर करता है एंड मकाली स्केल क्या मेजर करता है. ओके ओके, थैंक यू. No, I just have, yeah, I have 2 minutes to go and I'm trying to, नहीं यार, this is too much. हम ना क्या करते हैं, हम जल्दी से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ लेते हैं. Okay, let's try to look at the Pacific Ring of Fire. See people, ये नजर आ रहा है आपको बीच वाला पोर्शन, ये you can make out, right? Pacific Ring of Fire. मैं उसको रेड में क्यों मार्क करूं, मैं उसको ग्रीन में मार्क करूं? नहीं, ग्रीन में नहीं नजर आ रहा है. येलो में भी नहीं आएगा, पिंक में नहीं, पिंक में भी नहीं आएगा. कौन सा कलर यूज करूं मैं उसको? ब्लू में भी, द ब्लू विल आल्सो नॉट बी वेरी विजिबल यार. लेट्स ट्राई. कैन यू मेक आउट दिस horseshoe shaped thing? Huh? Can you make this out, right? So this is the Pacific Ring of Fire. Okay, this is the Pacific Ring of Fire that we are talking about. Now, if you wish to see दुनिया भर में, wherever we are in the world, what is the distribution of volcanic and seismic activity? Are there any places where you find a greater incidence of volcanic and seismic activity? And are there any places where, which are absolutely stable, which are untouched by this kind of activity, जहाँ पर volcanic eruptions नहीं होते, earthquakes नहीं होते, ऐसी कोई जगह है क्या? तो this is what we are trying to see. Okay. So basically, we are trying to figure where you see the maximum incidence of this activity, and there is one place which is called as the Pacific Ring of Fire. Okay, अब ये जो Pacific Ring of Fire है, ये जो ऐसा horseshoe shaped structure बनाया है, that is clearly that place जहाँ पर ना आपको you will see that it is all plate boundaries. Okay, can you make out ये Pacific plate जो है, this ये जो बीच में है, that is the Pacific plate. Okay, and then यहाँ से ऊपर से शुरू करते हैं. You have the Eurasian plate, the North American plate on the right, the Indo-Australian plate, then the Antarctic plate, the Nazca plate, the Cocos plate, the Fuca plate. तो इसे अलग-अलग different plates है.
एंड ये हर प्लेट का इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे विद द पैसिफिक. ओके, तो if this area is going to be so much surrounded by plate boundaries, clearly there will be a larger incidence of volcanic and seismic activity. Okay, this is a given. So this इसको ना circum Pacific belt भी कहते हैं, और then is because यहाँ पर इतना सारा volcanic activity दिखाई देता है, hence this place is also called as Pacific Ring of Fire. Okay, because वो Pacific के ocean के around ऐसे, it all happens to fall around the Pacific Ocean. So this is called as the Pacific Ring of Fire. Okay, almost 80% of the world's seismic and volcanic activity gets concentrated in this part. All right, and like we discussed, this traces a lot of boundaries. Okay, बहुत plate boundaries trace करता है ये. Pacific with Juan de Fucaco Coast, Indo-Australian, Nazca, North Philippine plate. अरे हाँ यार, वो Philippine plate एक important plate है यहाँ पे, ये वाला part. Okay, so clearly that is another important plate over here. Philippines में भी आपको activity दिखता है, right? Volcanic activity दिखता है. So that's an important part. All right. Countries कौन से involved होते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा. Which countries are involved? US है ना? US का western coast जो है कैलिफोर्निया वाला, तो वो वाला coast नजर आता है. मैं इसको हटाने वाली हूँ. I'm going to clear all these drawings and मैं red से mark कर रही हूँ उन जगहों को. Okay, ये this portion, US का western coast. All right, we are talking of the western coast of USA. Alaska वाला region भी, this portion also, ये थोड़ा सा उसके साथ associated जो Aleutian trench है ना, वो that is basically the problem. Okay, then west coast पूरा का पूरा actually. वो Rockies भी fall करते हैं वहाँ पे. You will see a lot of activity over there. Chile. This portion, Chile is also a problem. Okay, ये नीचे की तरफ South America में. Also Japan. Yes. मैम एक्चुअली मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ मैम, तो हमारा कल से एक प्लान मतलब चालू हो रहा है स्टेट बोर्ड के लिए. तो वो हमारा प्लान 10:40 से रात को 7:40 तक रहेगा. तो उसमें जो मतलब 5 आपका लेक्चर है ना 5 to 5:40, वो नहीं कर पाएंगे. तो हमने मैम को वो प्रॉब्लम बताई, तो मैम ने बोला कि जो लेक्चर होगा आपका वो लाइव कर देंगे और फिर गूगल मतलब यूट्यूब से लिंक भेज देंगे ग्रुप पे. तो आप अगर पॉसिबल हो तो मैम थोड़ा धीरे पढ़ाना जिससे हमें उधर समझ आ जाए. मतलब स्पीड थोड़ा सा कम. I should talk a little slower. I get what you're saying. Okay. Yes, ma'am. Okay. All right, Arman, I'll try to do that. I have tried to explain, right, my problem. Actually, you know, there is so much to say, and but I'll try to speak slowly. There is like no excuse. अभी जैसे लाइव मतलब अभी लेक्चर में हम आपको बोल देते हैं कि मैम थोड़ा धीरे पढ़ाओ, तो अभी उस टाइम पे तो नहीं बोल पाएंगे ना. तो that is true. As you see, I need that reminder every 10-15 minutes also, because then when I have to explain a lot of points now, my brain just goes, zoom आगे चला जाता है, and then my tongue just tries to keep pace with my brain. So and then there are so many things that I wish to tell you guys that I usually try to speak faster so that I can say all those things. I don't forget something. That's the reason why I speak so fast. Actually, it is a problem. It's my personal problem, but okay, ठीक है, I'll remember this, Arman. I'll try to keep this in mind when I teach. Thank you. Okay, thank you. So here we are. All right. So Chile, we've discussed where Chile is. Yeah, Japan is a problem. This you can see this area. This is Japan. Okay. यार वो आपको नहीं नजर आ रहा है अभी. मैं blue में mark कर रही हूँ. ये वाला area. This is Japan. Okay. Then Pacific Islands like Solomon Islands वगैरह वो यहाँ पर ये वाला region जो है, this is Solomon Islands and everything. Mexico, Mexico यहाँ पे, this is Mexico over here. Antarctica is a problem. This region is a problem. And problem as in clearly it has volcanic activity. It's not a problem. It just has a high incidence of volcanic activities. Russia का ये Kuril Islands and this portion, Kamchatka province, that clearly has a high incidence of volcanic activity. Okay, Papua New Guinea, Indonesia, yeah, this portion, ये जो portion है, this area, Southeast Asia as we call it. Okay, तो वो वाला region जो है, उसमें you have
इंडोनेशिया, यही पे बाजू में आपको थोड़ा सा फिलीपींस भी मिल जाता है, सो दैट रीजन ऑल्सो। ओके, ताइवान इज ऑल्सो एन इशू, ताइवान में भी मिल जाता है आपको, ग्वाटेमाला एंड पेरू एंड एवरीथिंग, वंस अगेन साउथ अमेरिका में पेरू। So ये clearly this is all spread out, but that is where you see a higher incidence of volcanic and seismic activity. Okay. Now I wanted to do mid-oceanic ridge and mid-continental belt, but I'm going to have to stop here because we are doing this in we have to also cover this, right? Polity bhi cover karna hai. So, or can I just try to take 5 minutes and then cover polity only for half an hour? Let's do it that way. So मुझे ना कम से कम ये topic तो खत्म हो जाएगा मेरा. Okay? Sorry people, let's just do it this way. Okay? I'll just take 5 minutes of your time from your polity lecture and teach you this. Okay? ये रहा first हमने जो cover किया था, that was clearly Pacific Ring of Fire. Okay? Next what we are looking at is the Mid-Oceanic Ridge. Okay? Mid-Oceanic Ridge भी आपको यही दिख जाएगा. Can you make out this portion? ये वाला, ये अटलांटिक ओशन है. ओके, दिस पोर्शन इज द अटलांटिक ओशन. ओके, मतलब नॉट द अरेबियंस में से पास करने वाला नहीं, मैं आपको ये एस शेप्ड ओशन जो है ना, ये वाला एस शेप्ड ओशन जो है ना, दैट इज द अटलांटिक ओशन. ओके, तो ये अटलांटिक ओशन के ठीक बीचों बीच, कैन यू सी दिस ब्लैक कलर्ड लाइन, हाँ, जिसको मैं अभी शेड कर रही हूँ, दिस ब्लैक कलर्ड लाइन दैट इज कॉल्ड एज द मिड ओशियनिक रिज. ओके, ये जो पूरा का पूरा लाइन है, that serves as the mid-oceanic ridge. Okay, now try to understand what that is. Mid-oceanic ridge जो है ना, it's a pretty continuous submerged volcanic mountain range. Okay, it pretty continuous लग रहा था, right आपको? It's a submerged volcanic mountain range. It is that place जहाँ पर दो plates diverge होती है. Okay, it occurs at a divergent boundary. So because those two plates are traveling in different directions, यहाँ पर clearly upwelling of magma होता है. Okay, there is an upwelling of magma happens for a long distance. ऐसे लंबे से, like there is a proper linear long chain of mountains. Okay, and you will see it's really huge, that chain is really long enough. Okay, so much so कि देख लीजिएगा ठीक से, ये आइसलैंड दिख रहा है आपको ऊपर यहाँ पे, दिस रेड कलर पोर्शन, दिस पोर्शन. ओके, ये आइसलैंड को क्रॉस करके आगे चला जाता है. दैट इज द रीजन व्हाई इट्स स्टैंडर्ड ओवर देयर. लाइक अगर आपको मिड-ओशियनिक रिज देखनी है तो ऑब्वियसली यू वोंट गो बिलो द सरफेस ऑफ बिलो द अटलांटिक ओशन, बट इफ इट इज अवेलेबल ऑन लैंड देन यस, लेट्स गो एंड सी इट इन आइसलैंड. ओके, दैट्स हाउ इट इज सी. एज ऑफ सी फ्लोर जो होता है, रॉक्स दैट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द रिज. वी हैव सीन दिस इन, हमने इसको पहले भी इसमें देखा था, राइट पीपल? हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी था ना, उसमें देखा था क्लियरली जहां पर प्लेट्स डाइवर्ज करती है, इफ द प्लेट्स आर डाइवर्जिंग, इफ दिस इज द पॉइंट एट विच द प्लेट्स आर डाइवर्जिंग, ओके, इफ दिस इज द पॉइंट ए, आई एम कॉलिंग इट पॉइंट ए, तो clearly the new crust is being formed at this part, है ना, the new crust is being formed in this part, and the farther you go away, the farther you are, that will be the older crust, है ना, the farther you go from that particular point, from the जहां पर divergent plate boundary है. Okay, this is the divergent plate boundary, right, जहां पे upwelling of magma हो रहा है, point A. So that is where the new crust is being formed, and the farther you go away, you will find the older crust. Okay, the older the crust will be. So you have to remember that the age of the seafloor rocks increases with increasing distance from the ridge. Okay, the farther you are from the ridge, the older the rock will be. Okay, जितना दूर आप उस ridge से है, वो रॉक उतना पुराना है. ओके, जितने आप रिज के करीब है, द क्लोजर यू आर टू द रिज. इस सेक्शन में, ये जो सेंट्रल सेक्शन है ना, यहाँ पर सबसे नया वाला रॉक मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर रोज नए सिरे से अपवेलिंग ऑफ मैग्मा हो रहा है एंड नए सिरे से रॉक बन रहा है. Okay, the rock is being formed here continuously. That is what is happening. These have moderate shallow focus earthquakes. They are also experienced over here, and it is you will see a lot of fracture zones and transform faults also over here. Okay, and this is the longest mountain chain on the earth. Okay? अगर पूरे earth का surface consider करो तो yes, this is the longest mountain chain. If you have to consider something that is above the water, on the crust of the earth, then you've got to consider Andes mountains को consider करना पड़ेगा. Okay, but this mid-oceanic ridge is clearly the longest mountain range on the earth. Mid-continental belt माने यारी अपना alpine Himalayan belt जो है ना, that is considered as the mid-continental belt. Okay, तो यहाँ पर usually आपको थोड़े से earthquakes मिल जाते हैं. Some 21% of total seismic events जो होते हैं earth के, वो इस belt पे आकर करते हैं. But clearly that area is clearly, you consider the kind of effect that it has on all these regions. ये वो सेक्शन है, राइट,
Now you will see the countries that are affected are Nepal, Bhutan, India, China, Pakistan, बर्मा, बांग्लादेश, ये सारे के सारे कंट्रीज जो होती है, all of these countries get affected by this, ये हिमालयाज में जो भी एक्टिविटी होती है ना, उसकी वजह से अफेक्ट हो जाता है वो. Okay, so that clearly this is called as the mid continental belt because it occurs right in the middle of a continent. Okay, अभी बस हो गया, बात का हम बाद में करेंगे. Okay, and today now I'll move on to polity then. This is what we are doing. Sorry, I took up a little more of your polity, but this is what we are doing. I confirmed. कहाँ गए आकाश? कल वो पूछ रहे थे, right? कि कौन सा यूएस के 2 states है which decide कि ये state जीतने के बाद पक्का यार election जीतना आसान हो जाता है. It is California because clearly उनका electoral college का share some 55 seats का होता है, and Texas का भी share थोड़ा सा ज़्यादा है. I think कुछ 35-38 seats का share है. So yes, I confirmed that fact. So it is California and Texas, but like I said, traditionally Texas goes to the Republicans, traditionally California goes to Democrats. That's how it has been for a very, very long time. So that is how it is. Southern states usually Republicans को चले जाते हैं, and then northern states जो होते हैं वो usually Democrats को जाते हैं. वो US का election है. Anyways, here we were discussing the salient features of the Constitution, and we were trying to see where our Constitution draws its inspirations from. Okay, from different other constitutions and countries. So we had come up to the Canadian Constitution, and then remember मैंने आपको बोला था कि Canada is a federation because out of convenience, more out of convenience than principle. Okay, because Canada can be really unitary when need be. Now you come to the Australian Constitution. Okay, वहाँ से हमने concurrent list का फंडा किया है, borrow किया है, and the freedom of trade and commerce and intercourse वो वाला भी, and joint sitting of 2 houses of parliament. Okay, this is an interesting aspect that allows both houses to have at least the Rajya Sabha, जो दूसरा house है ना अपना जिसके बहुत ज़्यादा powers नहीं है, at least that house gets to have some say in the legislative procedure. Okay, with this particular how do you say concept, at least Rajya Sabha gets some say in the legislation. All right, otherwise Rajya Sabha becomes really, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर joint sitting like in an amendment procedure. Let me specify once again, in an amendment procedure, as long as the joint sitting wala funda exists nahi, I'm sorry, I must have confused you. Joint sitting जो होता है, that clearly involves 2 houses sitting together and becoming वो जो result होता है वो obviously numbers पे decide होता है, right? Majority जिसकी होगी उसकी, majority usually किसकी होती है? लोकसभा की. All right, so when it comes to an amendment procedure, we do not have joint sittings. ये हमने clarify किया है. Okay, this has been absolutely clarified. अब उसकी वजह से क्या हो जाता है? Rajya Sabha still gets to have its say. This is what I was trying to say, that Rajya Sabha still gets to have its say even in case of a joint, because even in the case of an amendment, because you cannot introduce a joint sitting over there. Okay, that's the thing. Next you come to Germany का Weimar Constitution. Okay, यहाँ से हमने suspension of fundamental rights during emergency procedure, emergency का ये specific procedure has been drawn from the Weimar Constitution of Germany. Okay, Soviet Constitution तब का, because तब किया था हमने, अभी जिसको रशिया कहते हैं, fundamental duties. That's a रशिया में ना you don't have the concept of a motherland, you have the concept of a fatherland. Okay, so you have some as citizens of that country, as children of that country, not just citizens, as children of that country, you have a duty towards your fatherland, and वो duties जो है वो उनके fundamental duties वाले concept में चली जाती है. And the ideal of justice in the preamble, हमारा जो justice का concept है ना, that comes from Russia. We were very much influenced by Russia at that time. USSR से हम काफी impressed थे. Most of our leaders were. That is what it means. French Constitution से हमने republic, the whole idea of a republic है ना, we were very impressed with that idea, and the ideals of liberty, equality and fraternity है ना, ये 3 चीजें हमने clearly अपने preamble में वही से borrow किए कि ये 3 चीजें हमको चाहिए. South African Constitution से the process for amendment. Okay, amendment का जो process होता है वो हमने South African Constitution से borrow किया है, and the election of members of the Rajya Sabha, that has also been borrowed from there. Japanese Constitution से procedure established by law. Okay, तो ये different concepts है जो हमने अलग-अलग Constitution से borrow किए हैं.
Next, the rest of the salient features or important features of a constitution are that we are a parliamentary form of government. Okay, let's contradict this. Contrast करके compare करके देखते हैं parliamentary form of government and presidential form of government. इंडिया में parliamentary form of government है, as opposed to that USA has a presidential form of government. Okay, parliamentary form of government में clearly एक prime minister होते हैं and एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड ही हैज अ कैबिनेट. ओके, उनका एक कैबिनेट होता है, कैबिनेट एज इन, और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है. लेट्स कॉल इट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, COM बुलाते हैं उसको. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है इनका. एंड ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका प्राइम मिनिस्टर भी खुद पार्ट है, ये मिलकर सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते हैं. एंड वो, दिस इज वेयर द रियल पावर लाइज. ओके, विद इन द गवर्नमेंट दिस इज वेयर द रियल पावर लाइज. ओके, एंड देन in our case, that's how a parliament works. Okay, now अभी ये रहे प्राइम मिनिस्टर. ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, वो एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे गवर्नमेंट के या हमारी कंट्री के. ओके, मीनवाइल देयर इज अ नहीं, ये एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, ये रियल एग्जीक्यूटिव है. लेट्स से ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव. ओके, मीनवाइल जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है हमारी कंट्री के, दैट हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट. ओके, जिनको जिनके नाम पे सारे एक्शंस लिए जाते हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट. ओके, जिनके नाम पे सारे एक्शंस लिए जाते हैं, दैट्स द प्रेसिडेंट. हमारे जैसा ही एक सिस्टम ब्रिटेन में भी एग्जिस्ट करता है, बट वी आर ऑल्सो अ रिपब्लिक. इंडिया जो है दैट इज ऑल्सो अ रिपब्लिक, वेयर ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम जिसको हम कहते हैं, दैट इज एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो उनके पास भी एक PM है and they also have a council of ministers. You know, that prime minister also has a council of ministers. बट व्हाट दे हैव, जैसे हमारे एक प्रेसिडेंट होते हैं ना, वैसे उनका ये कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है ब्रिटेन के? पीपल, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ब्रिटेन? गाइस, अच्छा आप मुझे पूछ रहे हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मदरलैंड एंड फादरलैंड? कुछ नहीं, मम्मी पापा में क्या डिफरेंस होता है? यू हैव टू बी, यार फीलियलिटी तो दोनों को दिखानी पड़ती है, मदरलैंड को भी एंड फादरलैंड को भी. ये जस्ट वो, इट इज जस्ट कि हम कैसे फादरलैंड करके इमेजिन करते हैं ना हमारी कंट्री को, वैसे रशिया उसको प्रीटी मच फादरलैंड करके इमेजिन करता है. थोड़ा सा ज्यादा मैस्कुलिन है उनका कॉन्सेप्ट, आई गेस. यार मुझे बताइए, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ब्रिटेन? लॉज किसके नाम से बनते हैं, कंट्री किसके नाम से चलाई जाती है? वो किंग और क्वीन. सॉरी, किंग. डिड यू से? हाँ, किंग. उनकी क्वीन है, उनकी क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ टू. तो उनके नाम से चल रही है. वेरी करेक्ट, थैंक यू. वेरी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अभी अभी बोला ना हमने, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो उनकी क्वीन होगी. अभी क्वीन के बाद ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट एयर अपरेंट क्लियरली चार्ल्स है, प्रिंस चार्ल्स है. सो देन देयर इज क्लियरली, देयर इज अ लाइक, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है. द हायरार्की हैज ऑलरेडी, असेंडेंसी जिसको बोलते हैं ना, वो क्लियरली डिसाइडेड है ऑलरेडी कि यू विल हैव अ क्वीन एंड देन उसके बाद एक किंग होंगे एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. लाइक that's already decided. Okay, so this is what a constitutional monarchy means. By the way, that queen is also the constitutional head of Australia, New Zealand, Canada, because ये clearly dominions है उनके. All right, so of course now they are also trying to bring about a change and everything, so that happens. Anyways, here you go. Right, so समझा आपको ये? This is a parliamentary form of government where you have a parliament and you know there is a legislature and you have the prime minister and so on and so forth. Okay, अभी ये वाला जो होता है ना, यूएसए का जो है, दैट इज द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, ये वहां पर जो आपका सारी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट एंड हिज स्टाफ. उनका जो स्टाफ होता है ना, वो सारे डिसीजंस लेते हैं. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस, देयरइन लाइज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, okay, let's go through this once more. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, sorry, you're right, I just should not speak very fast. All right, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है,
तो उसमें यू हैव नॉमिनल एज वेल एज रियल एग्जीक्यूटिव्स. ओके, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब जो हमारे केस में प्रेसिडेंट है, जिनके नाम से कंट्री चलती है, बट एक्चुअल डिसीजंस कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट. ओके, दे गेट टू डिसाइड, दे गेट टू मेक द रियल डिसीजंस. प्राइम मिनिस्टर ओनली एसेंशियली. मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर एंड ऑल दैट इज ऑल फाउंड ओवर देयर, एंड मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर. ओके, ये मिनिस्टर्स जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट होने चाहिए. दिस इज वन वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. प्रेसिडेंट का जो स्टाफ होता है, दैट नीड नॉट बिलोंग टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और द सेनेट. ओके, दैट नीड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे मिनिस्टर्स को जैसे लेजिस्लेचर को इलेक्ट होना जरूरी है या नॉमिनेट करा दो, जो भी है, नहीं, इलेक्ट होना जरूरी है. यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. ओके, हमारा जो लेजिस्लेचर है ना, उसका पार्ट होना चाहिए उन्होंने. ओके, मिनिस्टर्स ने. ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, अमेरिका में क्लियरली देयर इज नो कंपल्शन कि उनके जो वो अलग नाम से बुलाते हैं उनको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ऐसे, डिफेंस मिनिस्टर इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सो ऑन सो फोर्थ, नहीं ऐसे अलग नाम से. लेकिन उनके जो मिनिस्टरियल जॉब्स होते हैं, दोज पीपल और दोज ऑफिसर्स नीड नॉट बिलोंग टू द, उसके जो वो जो ऑफिसर्स है, दोज नीड नॉट बिलोंग टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और द सेनेट. लेजिस्लेचर का पार्ट होना जरूरी नहीं है उन्होंने. ओके, दिस इज वन डिस्टिंग वेरी डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक. एंड लीडरशिप हमेशा प्राइम मिनिस्टर का या स्टेट में चीफ मिनिस्टर का होता है. एंड इस हाउस का डिसोल्यूशन पॉसिबल है, लोअर हाउस का जो डिसोल्यूशन है दैट इज पॉसिबल. ओके, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं. यूनिक कॉन्सेप्ट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके, now there is another principle of our polity which says कि we are a parliamentary sovereignty and judicial supremacy. दोनों चीजों में हम how we kind of balance है. okay, इन दोनों में kind of balance मानते हैं हम लोग. now parliamentary sovereignty का जो principle है, that is adopted from the British Parliament. okay, parliamentary sovereignty माने क्या कि पार्लियामेंट सुप्रीम है. That is what we believe, है ना. सुप्रीम नहीं, सुप्रीमेसी नहीं, सोवरेंटी बुलाते हैं उसको. सोवरेंटी का मतलब होता है इट इज सेकंड टू नन. सोवरेंटी माने इट इज सेकंड टू नन. ओके, इट इज ऑल पावरफुल इन इटसेल्फ. इट इज सेकंड टू नन. सॉरी, 1 minute. ओके, सो इस केस में क्या हो जाता है ना, द प्रिंसिपल ऑफ एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि हमने जुडिशियल सुप्रीमेसी इज द जुडिशरी, मैंने आपको बोला था ना, जो जुडिशरी सुप्रीम इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द जुडिशरी इन अमेरिका क्लियरली स्पेसिफाइज दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो है जैसे अमेरिकन जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करके बताता है. ओके, सो क्लियरली द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को बिलोंग करता है. नाउ ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास एक जुडिशियल रिव्यू का पावर है. ओके, जुडिशियल रिव्यू का पावर वो जुडिशियल रिव्यू का पावर वो होता है जिसमें व्हाटएवर लॉज आर मेड विद इन द लेजिस्लेचर ऑफ विद इन द इंडियन लेजिस्लेचर, उसका कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने का पावर जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का है. whether these laws, whether these legislations that are made within the Indian legislature, ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, ये बताना सुप्रीम कोर्ट का काम है. ओके, लाइक सुप्रीम कोर्ट कैन चेक दिस आउट. whereas पार्लियामेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है एंड उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को भी अमेंड कर सकता है. ओके, पार्लियामेंट में उतनी ताकत है. तो हमने दोनों तरफ ये चेक्स एंड बैलेंसेस रखा है. हमने ना तो कहा है कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है, हमने पार्लियामेंट्री सोवरेंटी कहा है, लेकिन हम पार्लियामेंट को भी, हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में भी बिलीव नहीं करते. हम प्रेसिडेंशियल हम ऐसे किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. ओके, क्लियरली वी बिलीव इन दैट. Next you come to integrated and independent judiciary. ये भी एक concept है हमारा. We have a hierarchical system of courts. We do not have a parallel system of courts. Please remember this, okay? Supreme Court जो होता है, that is at the apex. I had already told you कि नीचे ना आपके multiple, you have those multiple smaller courts, district courts and ये court and all. Then उसके बाद उसका जो next level है, अब इनके भी काफी ये होते हैं, types होते हैं, okay? So you will have those multiple distinction. And then यहाँ पर इस ये district level पे, okay? Then state level पे एक सारे high courts होते हैं. You will have all those high courts, okay? And then final जो supreme court बैठा होता है, that's where the supreme court is, okay? It's at the top of the pyramid. तो ये clearly we have a hierarchical system of courts, okay? Supreme Court is the federal court, हमारा federal court है वो, and clearly it is the ultimate appellate authority, okay? इसके beyond India law of land पे पूरे इंडिया में कोई और दूसरा, एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो हो गया, इसके बियॉन्ड आप जाके अपील नहीं कर सकते. ओके, अब मुझे एक बार किसी बच्चे ने ये भी पूछ लिया था
कि कैन वी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमको मंजूर नहीं हुआ तो कैन वी गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहीं पढ़ा था, हेग में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कैन वी गो ओवर देयर। लेट मी रिमाइंड यू, सुप्रीम कोर्ट इंडिया में अगर कोई इंडिया से रिलेटेड अगर कोई केस है, इंडिया के अंदर, इंडिया का डोमेस्टिक कोई केस होगा, तो दैट हैज टू बी, उसका अल्टीमेट एपेलेट अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। वॉट एवर द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी कंसिडर्ड फाइनल विद इन द लॉ ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया का लॉ जहां तक रेलिवेंट है वहां तक। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज यूजुअली फॉर आर्बिट्रेशन जब आपका इंटरनेशनल मैटर्स इन्वॉल्व होता है, दो कंट्रीज के बीच में जब प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अवेलेबल है। ओके, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस पीपल। इट हैज लाइक, इट इज नॉट लाइक यार अभी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जमा तो कैन वी जस्ट गो बियॉन्ड दिस, ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट फॉर अस, ऑलराइट, एज फार एज ऑल मैटर्स इंडियन आर कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट विल बी द फाइनल कोर्ट। Next you go to यार फंडामेंटल राइट्स है अपने पास, that is a very important part of the Indian Constitution. Okay, जैसे अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, एंड वैसे ही अपने यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने वही से बोरो किया है। एंड दिस, ये जो फंडामेंटल राइट्स है अपने, दोज आर गारंटीड बाय प्रेरोगेटिव रिट्स। ओके, हम 5 रिट्स, प्रेरोगेटिव नहीं लेकिन 5 रिट्स होते हैं हमारे, तो उस वो गारंटी करते हैं हमको। ओके, लाइक if there is a violation of the fundamental article, fundamental rights, then ये जो writs होते हैं वो guarantee करते हैं कि हमको उसका redressal मिलेगा, like we'll find justice over there, okay, in the Supreme Court or the High Court directly. Now this is subject to reasonable restrictions. हमारे fundamental rights absolute नहीं है, obviously they will be subject to reasonable restrictions. Okay, we have this concept of directive principles of state policy. I've already explained what that is. उसका एक दूसरा नाम भी है, instrument of instructions. Okay, it is called as the instrument of instructions. उसका क्या मतलब होता है कि the state is being given a few instructions कि see this is how you should formulate your policies. Whichever government comes to power, उसको एक instructions दिए जाते हैं, within that document there are instructions and clearly एक guideline दिया जाता है कि see this is how policies are to be made, इस तरह से legislation करो, these are the topics based upon which you should really be making laws, and you know, your policies should be centered somewhere around these principles. And then there is something called as adult universal franchise. Okay, universal adult franchise. Universal adult franchise says that when you see now that this upholds the principle of democracy and equality, it means that irrespective of whether a person is educated or not educated, whether they hold any property or not. पुराने ज़माने में ना सिर्फ property holders could vote. Okay, that's where this logic of mine comes from. इसलिए मैं इस बात को clearly ये करती हूँ. तो irrespective of किसका income कितना है, whether that person is poor or rich, whether they have enough education or not, literate है या नहीं ये भी matter नहीं करता है. Education की तो बात ही छोड़ दीजिए, कौन से gender को belong करता है, not concerned. All we are concerned with is कि एक certain age complete हो गया है क्या, and whether that person is, you know, of sound mind. Sometimes I say like that is also one principle that we consider. So clearly, as long as that person has completed a certain age, हमारे यहाँ पे 18 है, so we will consider that person fit for voting. Okay, that person can vote within the Indian elections. चलेगा, समझा? That is universal adult franchise. So हम यार अब मैं कैसे बताऊँ आपको, for until like ये अभी जो सेंचुरी बीत गई ना, उस सेंचुरी तक हम कोशिश कर रहे थे कि विमेन को वोटिंग के राइट्स मिले, एंड बड़ी बड़ी कंट्रीज में कोशिश कर रहे थे. इट इज नॉट लाइक even you know, famous countries like Switzerland में भी 60s में वगैरह मिला, 60s या 70s में मिला women को वोट करने का राइट. so same so with USA. so all this ना, ये like clearly universal adult franchise is a huge thing for India to adopt right at the very beginning. Okay. Okay, preamble consider करते हैं. Okay, preamble जो है हमारे constitution का, that is an introduction. Okay, the preamble of the constitution is clearly an introduction to the constitution से पहले ना preamble available है, तो ये उसका proper text है. Okay, this is the proper text and ये वैसे ही लिखा हुआ है. ये वाले जो दो है ना, ये clearly ऐसे टेढ़े टेढ़े लिखे हुए हैं, मतलब italics में लिखे हुए हैं. Okay, so इसी like this is not a typo, that is what I'm trying to tell you guys. Okay, अब ये जो है ना preamble, that is based on the objectives resolution. मैंने आपको बताया था, remember जब हमने हमारे constituent assembly के meetings शुरू किए थे,
तो पहले हमने वो प्रेसिडेंट चुन लिए एंड देन द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे पर कि हमने एक objectives resolution present किया. Okay, what are our objectives? Okay, and उसका जो एक modified form है that is considered the preamble. Okay, that is the preamble. तो ये हमने December 1946 में करवाया था, 11 December, if I'm not very wrong. Okay, preamble के functions क्या है? Preamble is the source of all power. Okay, it clearly defines. Look at let's read the preamble. We, the people of India, we and what having solemnly resolved and so on and so forth, what are we doing? We do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Where is the power of the constitution coming from? Where does the constitution derive its power? It derives its power from the people. Okay, people are considered most powerful and they are clearly the source of all power. Okay, so clearly that is what the constitution says. ये clearly define किया जाता है. Nature of the state क्या बोला है हमने? How do we define our state? Sovereign, socialist, secular, democratic republic. That is how we define the state. Okay, ये हमारा state है. We are sovereign, मतलब we are clearly independent and we are second to none. Okay, we do not bow down to anyone. That is what it means. Okay, we are our own. How do you say? हम खुद के मालिक है. That is what it means. So that's what sovereign means. Socialist हमारा खुद का brand है socialism का. Our socialism does not necessarily match with that of China or Russia or something. Okay. Secular meaning state का कोई religion नहीं होगा. Okay. Secular का मतलब होता है that the state does not have, state as in India. India as a state does not have any official religion. Okay. सारे religions equal है. That is what secular means. Secular does not mean that India does not believe in. Secular का अगर आप Google करेंगे ना तो English में एक word होता है non-religious, irreligious. Okay, मतलब जो religion से concern नहीं है ऐसी चीजों को secular कहेंगे. इसका एक बहुत common English में usage मैं आपको बता देती हूँ so that you don't feel confused later on. History, geography, social studies वगैरह, math, these are considered as secular subjects. Whereas अगर आप ऐसे कुछ religion related studies करते हैं ना, जैसे हमारे depending on the religion, if you are taught the Bhagavad Gita or the Holy Bible or the Holy Quran, तो then that would be called as religious studies. Okay, तो अगर आपको ये holy books में से कोई subject सिखाया जाता है तो that would be called as religious studies. Whereas हम ये जो polity जो हम पढ़ रहे हैं, that is secular studies. It has nothing to do with religion. Okay, so इसको कहते हैं, so secular actually can be used in two ways. One in which you say that there is no religion. Okay, religion नहीं मानते. तो China जब खुद को secular बोलता है तो it is trying to say कि we do not believe in any religion. China, in fact, being a communist country, it does not how do you say, वो religion को नहीं, मतलब वो religion को encourage नहीं करते. Let's say China doesn't encourage religion. Okay, being religious. Whereas India में the thing is कि you have freedom of religion. State कोई religion को prefer नहीं करेगा, but everybody else in the country is free to follow any religion they wish to. Okay, that is what secular means. Democratic means clearly it's a democracy. It's I don't have to explain to you what a democracy is, right? And we are a republic. Republic का मतलब होता है कि there will be an elected constitutional head. Okay, हमारे जो president होते हैं indirectly elected होते हैं, लेकिन वो elected होते हैं. Okay, that person is not like that position is clearly not something that is going to be passed on from father to son or mother to daughter or mother to son. ऐसे hierarchical, I mean it's hereditary position नहीं है. It's not a hereditary position. Okay, it's an elected position. वो proper elected head होते हैं हमारे. Okay, that is what a republic would mean. इसका very simple terms में कहना होगा कि king or queen is not head of state. Okay, republic would mean that a king or queen is not the head of state. जैसे constitutional monarchy है ना ब्रिटेन में या फिर भूटान में या until a long time ago जापान में हुआ करता था. So some time ago. So India is clearly a republic. Okay, not a constitutional monarchy. And what are we securing for all of our citizens? To secure to all of its citizens justice, social, economic and political. ये पूछा जाता है. What kind of justice are we seeking for the citizens of India? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. I have told you again, I'll remind you once again, preamble को by heart कर लीजिएगा.
equality of status and opportunity. Every citizen should have that, every citizen, there should be equality in status and opportunity. Okay, so and these principles are repeated further in the constitution. When we consider the fundamental rights and everything, you will see कि हम ये principles repeat करते हैं आगे जाके. And fraternity होना चाहिए, which assures the dignity of the individual, and the fraternity is brotherhood. Okay, so भाईचारा की बात करें हम लोग. So that assures the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Okay, that is what we are ensuring. And what are we doing? We are securing for all of the citizens. We are constituting India in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, and we hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. That is what we are saying. Okay, ये preamble है. I remind you once again, इसको please by heart कर लीजिएगा. Okay. लिया ना हमने. अभी नेचर ऑफ स्टेट पता चला, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्लियरली. We are going to uphold the ideals of liberty, equality and fraternity. बोला ना, क्लियरली बोला हमने, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें हमको सिक्योर करनी है. ये हमारी आइडियल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है. ओके, एंड डेट ऑफ अडॉप्शन इज गोइंग टू बी 26 नवंबर 1949. ओके, ये डेट याद कीजिएगा. Contrasted with 26 Jan 1950, on which the constitution was brought into force, and hence that day is called as the Republic Day. Okay, so तब तक हमने 2 महीने पहले in November we had only adopted, enacted and given to ourselves this constitution. Signatures सारे इस दिन पे हुए थे. इस constitution पे जितने भी signatures हुए ना, मतलब major signatures जो है वो इस दिन पे हुए 26 नवंबर को. Okay, and finally एक proper formal ceremony से we brought the constitution into force on 26th Jan 1950. Okay, why? Because we had already celebrated that as an Independence Day back in 1930. All right. Preamble is considered a part of the Constitution. ये एक बहुत important चीज है. There was a case, okay, earlier, एकदम शुरुआत में जब Constitution introduce हुआ था ना अपना, तो there was a case जिसमें clearly Supreme Court ने बोला था कि Preamble is not a part of the Constitution. Okay, so by now you have to know कि केशवानंद भारती का judgment में clearly बोला गया है कि preamble is also a part of the constitution and hence it is liable to amendment. अगर बाकी का constitution amend हो सकता है, if the parliament has the right to amend the rest of the constitution, then it also has the right to amend the preamble. Okay, amendments कौन से हुए हैं preamble को? Preamble मैंने परसों भी बोला था आपको, amendment 2 बार हुआ है preamble का by the 42nd amendment. Okay, दो phrases introduce किए थे, वो जो italics में लिखे गए हैं वो phrases. Okay, we are talking of those phrases, socialist, secular and integrity. Okay, ये 2 phrases introduce किए गए थे, add कर दिए गए थे. Preamble is non-justiciable, non-enforceable. Okay. Oh, sorry, I had muted myself गलती से. Here we go. Preamble non-justiciable होता है, non-enforceable होता है. Non-justiciable and non-enforceable का मतलब, okay, try to understand. Non-justiciable मतलब justiciable meaning something that can be taken to court. Okay, कि see, this is promised, this is the law, this is promised, and since this was not done, then I can sue somebody for it. Okay, that is called being justiciable. A matter that can be decided in court. Okay, something in the court of law, मतलब वो high court, supreme court वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे ये matter decide हो सकता है, ऐसे matter को कहेंगे justiciable. Okay, तो preamble is not justiciable. If there is something promised in the preamble and you say, यार I don't feel fraternity, I don't feel enough, enough fraternity या enough equality मुझको लग नहीं रही है for myself in India, I can't pick up this part of the preamble and say, see, you promised this in the preamble, right? हमारे preamble में ये promise किया गया था. How come I do not have this? So I'm suing somebody for this purpose. Okay, I'm suing someone in the court for this purpose. So this is not allowed. Okay, because preamble is non-justiciable. आप यहाँ पर जो लिखा है उसको you can't take it into a court of law and say, see, this was promised, why am I not getting it? All right, समझा? In very simple terms, that is what justiciable means. Justiciable means a matter that can be decided in court. All right. Non-enforceable also means मतलब उसको court में नहीं यार enforce किया जा सकता. You can't enforce it in the court, right? That's not how it works. All right. आपके जस्टिसाइबल ये जो है वो प्रिंसिपल्स हमको बाद में लिखने पड़ेंगे. अभी गुड ईयर पीपल, समझा आपको? आई एम नॉट गोइंग एनी फर्दर. ओके, आई इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल हैप्पीली आंसर दोस, बट दिस इज इट. एंड कल से ना देन वील पिक अप समथिंग एल्स. हम दूसरा टॉपिक यूज करते हैं. वी विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन. एक ये शुरू कर देंगे हम.
टॉपिक शुरू कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन का. Is there anything that you wish to ask? Just a minute to go, so then I'll explain. नहीं तो नहीं. And I'm telling you guys, है ना, मंडे को पेपर्स पब्लिश होंगे, तो प्लीज उसको वहां पे अटेम्प्ट कर दीजिएगा, बिकॉज मैं वही पेपर थर्सडे को डिस्कस करूंगी. ओके, डिस्कस दैट पेपर ऑन थर्सडे. Thursdays will be paper discussions. Whether you have attempted or not, I'll still discuss the paper. Excuse me, Rinku ma'am, sorry to bother you. Not at all, ma'am. Please tell me. Leena ma'am here. Ma'am, are you continuing the 620 lecture as well? No, not at all, ma'am. I'm going to take my leave now. Bhaiya asked me to do that. No, ma'am. I will not continue the lecture from going forward. यहाँ से आगे नहीं. 620 is my limit, ma'am. Is there some confusion regarding it? Was I told to continue the lecture from 6:20 to 7? Hello? No. Okay. Thank you. Thank you, Shreyash, for confirming that. यार मुझे जब तक कोई फोन करके नहीं बोलता तब तक मैं नहीं करती है. Anyways, चलो. Thank you very much, people. You guys take care, stay safe, and thank you for joining me once again. Okay. पेपर पब्लिश करते हैं. हाँ, मैं बता रही हूँ कहाँ पब्लिश करते हैं. सॉरी. आपका जो ऐप होता है ना, उसके ऊपर वो पेपर आ जाता है. ओके, आई डोंट नो अभी कैसे आपको मिलता है. यस मैम. Ma'am, you continuing, no? 6:20 to 7? No ma'am. Okay, My ma'am, lecture fine. is from. Okay. Thank you, ma'am. Right. Thank you, ma'am. So this, Shreyash, like I was telling you, the paper is published on the app somewhere. Okay, I don't know yet. You go and find where the. I have never gone to see the paper over there. So on the app, but it is available to you guys on the app. You guys supposed to attempt the paper there on Monday or any following day. But I will discuss that same paper on Thursdays, not on the app. मेरे पास खुद का version होता है उस paper का, तो मैं उसको discuss करूँगी. Okay. What I'm saying is कि बेहतर होगा अगर you people already attempt the paper and then you can see what corrections you're supposed to make, right? अगर आपके कोई गलतियां हुई होंगी तो फिर we can correct those. You will get an idea of what you're doing. But if you have not attempted the paper, then it becomes very difficult to see how far you've आपका score क्या है, कैसे आप fare कर रहे हैं. That will be difficult. ठीक है क्या? चलो, I'm running. Bye bye. Thank you very much and take care once again.